तृतीयं निर्णायकद्वन्द्वं पार्ल नगरे सम्प्रति प्रचलति इति वार्ताः। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम NPS। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। सुरक्षित कल के साथ साथ NPS आज आपको एक नया आत्मविश्वास भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी NPS से जुड़ सकता है। किसी भी POP जैसे बैंकों, NBFC के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना NPS खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए NPS जरूरी है। मिलिए दान बहादुर जी से। अरे, अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग। सारे रिस्क समझे, पूरी रिसर्च की, एक्सपीरियंस है, थोड़ा थोड़ा और लॉस होगा पूरा पूरा। ऑप्शंस में रिस्क ज्यादा होता है, समझ और क्षमता के हिसाब से लें। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर SP शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। Warm welcome, Dr. Sharma. जी शुक्रिया, थैंक यू। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेक। Parliament passes the Telecommunications Bill 2023 to replace the Indian Telegraph Act 1885. Key domestic stock indices rebound from early losses. Sensex finishes at 70,865 and Nifty ends at 21,255. And a total of 1.19 crore projects under PM Awas Yojana Urban have been sanctioned. 78 lakh houses have been completed. संसद ने भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 का स्थान लेने के लिए दूरसंचार विधेयक 2023 को पारित किया। घरेलू शेयर बाजार शुरुआती घाटे से उबरकर लाभ के साथ बंद हुआ। प्रमुख सूचकांकों में सेंसेक्स 70,865 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 21,255 दर्ज हुआ। और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत कुल 1,19 लाख परियोजनाओं को दी गई मंजूरी। 78 लाख आवास बनकर हुए तैयार। The Parliament has passed the Telecommunications Bill 2023 with the approval of Rajya Sabha today with amendments. The bill has already been passed by the Lok Sabha. The bill has been brought to transform and reform telecommunications sector, services and its network. The bill seeks to amend and consolidate the law relating to development, expansion and operation of telecommunication services. The bill seeks to replace the Indian Telegraph Act 1885. Replying to the bill after discussion, Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav said the bill aims to bring paradigm shift in the telecom sector. He said the bill ensures highest priority to user protection. He said it will curb the cases of
impersonation and issuance of SIMs by fraudulent means. The IT Minister said provision of stringent punishment has been made for violators, which ranges from 3 years jail to a punishment of up to 50 lakh rupees. The minister said that in the bill there has been provision of an effective grievance redressal mechanism, which is digital by design. He said an online dispute redressal mechanism will provide speedy resolution to the consumers. Mr. Vaishnav added that the right-of-way provision will ensure a common accessible corridor along with highways, rail and canals with approval of concerned authorities. He said it will ensure transparent auction of spectrum, which is very important for the telecom sector. Dr. Sharma, how important is the amendments that have come into play now in the Telecommunications Bill 2023, replacing Indian Telegraph Act 1885? Yes, this is a great breakthrough. I would say this is the development of a century, actually, which has opened a great breakthrough for the Indian economy, because this is very vulnerable also, because sometimes the misuse or some other things happen in such a scenario. But the government has passed the bill, and this has many provisions which are in favor of the consumers, and the protection will also be there. And I believe because this is a main ingredient of the Indian economy. And as we are moving ahead with the AI and more and more advancement, and we are moving ahead in the digital transactions, so this breakthrough, I think, will provide a great speed to the Indian economy, and will ensure all the like the protection of the consumers and the rights of the producers. डॉक्टर शर्मा, कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं इस नए जो कानून बनने वाला है उसमें, कि सबसे महत्वपूर्ण है कि गलत तरीके से, नहीं फर्जीवाड़े से यदि सिम बनाया जाता है तो 3 साल की जेल से लेकर 50 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान नए कैले कानून में होगा। यहाँ हम ये समझना चाहते हैं कि क्या ये जो इस तरह की गड़बड़ियाँ हैं उसको दूर करने के लिए एक समुचित यानी कानून है, सख्त है, या इसके बाद भी वो प्रवृत्ति बनी रहेगी? देखिए, ये बहुत ही वल्नरेबल सेक्टर है, तो इसमें ऐसे प्रावधान जो कि बहुत ही स्ट्रिंजेंट होने जरूरी थे, क्योंकि इसके मिसयूज से बहुत सारे जो पहलू हैं वो इम्पैक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे जो सोशल अनरेस्ट हो सकती है, फ्रॉड्स होते हैं, अपराध, आर्थिक अपराध नहीं बल्कि आतंकवादी अपराध। यस। तो इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि बहुत ही वल्नरेबल स्थिति होती है ऐसी सिचुएशंस में, तो इसके लिए बहुत ही स्ट्रिंजेंट जो लॉज हैं वो होने बहुत जरूरी थे, और सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है कि इसके ऊपर एक जो सजा का प्रावधान और साथ में बहुत बड़ा जुर्माना भी आदमी को भुगतना होगा, क्योंकि जो फ्रॉडुलेंट सिम्स हैं वो देखने में हमें लगता है कि हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं, वो इतना लाइट नहीं है। दैट शुड बी कंसिडर्ड अ मेजर फ्रॉड इन द सिस्टम, एंड वो बहुत बढ़िया कदम लिया है सरकार ने, हम उसको श्लाघा करते हैं, और इसका बहुत स्ट्रांग एनफोर्समेंट होना चाहिए। And Dr. Sharma, telecommunications, as you said, is the key driver of economic and social development. It is the gateway to digital services and the security of the country as well. And therefore, it is very important on the safety of telecommunication networks, and also for us to focus on a safe and secure telecommunication networks that will provide inclusivity, digital inclusive growth in the country. So in that light also, this bill is very important. Yes, that is because now we are moving ahead with more and more transactions digitally, so telecom protection becomes more and more important, because if one is transacting through the mobile phone or like some chip, so there must be some security, and this bill is, I think, considering all the recent developments like digitalization and all the developments, because we are moving ahead with the artificial intelligence also, so this is very important that the government has provided this breakthrough
to the telecommunication. Quickly, Mr. Vaishnav has also said about the right-of-way provision, which will ensure a common accessible corridor along highways, rail and canals. Would you throw some light on that? Yes, this is right of way. This is a right under which the telecommunication infrastructure provider will be facilitated the use of public property upon application. Like some infrastructure companies making some infrastructure, telecommunication companies some making infrastructure, then there is some canal or some railway track or some private property, then they will be able to make an application to take their way to build that infrastructure. So rejection can only be on a very substantial grounds. So that will be provided, and the government will facilitate to provide that way to the those who are building the telecom infrastructure. सरल भाषा में श्रोताओं इसका आशय ये हुआ कि पहले जो टावर वगैरह लगते थे या दूर संचार कंपनियों को पर जटिलताओं का विभिन्न सामना करना पड़ता था, उसे इस नए कानून में इसके प्रावधानों में आसान कर दिया गया है ताकि दूर संचार कंपनियों को अपने प्रसार में सहयोग मिल सके, सुविधा मिल सके। श्रोताओं, यहाँ पर हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। सुरक्षित सेवानिवृत्ति के साथ साथ एनपीएस आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने में भी मदद करता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। मिलिए एक और दान बहादुर से। इन्होंने गारंटीड रिटर्न्स के प्रॉमिस पर इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट पक्का है, गाड़ी भी पक्की। मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, कोई गारंटी कैसे देगा? आप छोड़ो ना। और आप हाथ धो लो पैसों से। गारंटीड रिटर्न्स धोखा है। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए चलें अब शेयर बाजार की ओर। सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार, जहां आज शुरुआत में भी बिकवाली के आसार थे, लेकिन आज बाद में आकर रुख पलट गया। कल तो भारी बिकवाली हमने देखी ही। वैश्विक बाजारों में विशेष रूप से अमेरिका में आज के रुख को देखते हुए, यानी देर रात जो वहां कारोबार चल रहा था उसको देखते हुए अंततः आज लिवाली का चलन देखने को मिला और सेंसेक्स तथा निफ्टी दोनों लगभग आधी फीसदी से कुछ ऊपर बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 359 अंक यानी 0.51% की बढ़त लेकर 70,865 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 105 अंक यानी 0.5% की बढ़त के साथ 21,255 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझौली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में कहीं बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.6% लाभ के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.7% की वृद्धि हुई। The key domestic stock indices reversed losses seen in the first half of the trade and rebounded sharply, tracking a rise in US futures and ended in the green. The Sensex soared 359 points or 0.5% to finish at 70,865. The Nifty also jumped 105 points or 0.5% to end at 21,255. In the broader market at the BSE, the mid-cap index gained 1.6% and the small-cap index climbed 1.7%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 21 companies appreciated while of 9 companies declined. Power Grid surged 2.3% and HDFC Bank gained 1.9%. Kotak Bank rose 1.7% and Reliance added 1.4%. On the other hand, Bajaj Finance declined 1.6% and Axis Bank lost 1.3%. HCL Tech fell 1% and Mahindra slipped 0.8%. In sectoral indices at the BSE, all sectors logged gains except auto sector, which ended marginally lower. Utilities sector climbed 2.5% and power index gained
2.4%. Oil and gas and services, both sectors rose 1.7%. The overall market breadth was positive as the shares of 2,669 companies appreciated while those of 1,106 declined. A total of 121 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपया आज 83 रुपए 28 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्देशीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 102.37 पर चल रहा था। डॉक्टर शर्मा, कल हमने गिरावट का सिलसिला देखा, आज भी बिकवाली के आसार लग रहे थे, लेकिन फिर बाद में लिवाली हुई और छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन काफी बढ़िया रहा है। किन अर्थों में ले रहे आज के कारोबार को? देखिए, जो कल हमने एक बड़ी भारी एक करेक्शन देखी जिसमें निफ्टी लगभग कोई 300 पॉइंट्स के आसपास फिसला, तो ये एक बहुत ही ग्रेट प्रॉफिट बुकिंग थी जो कि एक जंक्चर पे जाके, जैसे हमने पहले भी बात की है कि मार्केट्स में एक बिल्डअप होता है, कहीं पे जाके एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ज़रूरी भी होती है, उसके बाद वापस में बिल्डअप बनता है। तो वही हमने देखा कि कल जो प्रॉफिट बुकिंग आई, एक मेजर डिसलिरेशन आई, लगभग कोई सेंसेक्स 900,000 पॉइंट के आसपास लुढ़का। तो आज उतनी ही तेज़ी से रिकवरी भी हमने देखी, भले ही मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल थी, क्योंकि अब मार्केट्स आने वाले टाइम में और भी वॉलेटाइल रह सकती हैं। जब एक हाई लेवल पे मार्केट एक अच्छा स्तर बना लेती है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग होना भी स्वाभाविक होता है और वापस रिकवरी भी होनी स्वाभाविक होती है, क्योंकि जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव ग्राउंड्स हैं, जो पॉजिटिव फंडामेंटल्स हैं, वो स्ट्रांग है, उसमें तो कोई कमी नहीं होती है। लेकिन लोग अपना प्रॉफिट बुक करके वापस फिर एक लोअर स्तर पे फिर एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको मार्केट में बहुत आगे दिशा दिखाई दे रही है कि मार्केट्स अभी और न्यू हाइज बना सकते हैं। तो मैं इसको एक हेल्दी करेक्शन कहूँगा और इसमें कोई ऐसा नेगेटिव नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था हम देख रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रांग है और हमारे जो अभी पहले 6 मंथ्स में जो हमने अभी जीडीपी के नंबर्स देखे, 7.7% का जो ग्रोथ हमने देखा है वो बहुत ही बेहतर है, बहुत सारी दुनिया की इकॉनमी से बेहतर है और टॉप 10 में तो हम ऑलरेडी ग्रोथ लीडर हैं। तो आने वाले टाइम में ये वॉलेटिलिटी तो हम रूल आउट नहीं कर सकते, वॉलेटिलिटी रहेगी, मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, लेकिन मार्केट्स ओवरऑल एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी की तरफ अपना रुख रखेंगे। So what happened today? There was a lot of buying action in banks, auto and IT counters. What's your take on that? Yes, because all these three sectors are the main ingredient of the Indian economy, because the banking is the backbone, and if the markets move and the economy moves, then the banking sector also flourish. So that's why I think banking sector will remain strong, as we have observed a great movement in the banking stocks during the last few days after the GDP numbers and pause by the major central banks on the policy rates. So banking sector is looking more and more lucrative, as this is providing a great strength to the economy and providing not only to the economy but the businesses and all the economic system is centralized about the banking system. So that is a great strength of economy. So IT is of course is a green sector of the Indian economy, and we are very strong in the IT services. So this sector is also I think is a long-time growth sector for the economy. And auto represents the demand trajectory. As the GDP grows and incomes grow, then the auto sector also there is a great upsurge in the passenger vehicle growth. They are increasing month after month, and I would like to mention some data that the sales of passenger vehicles was 3,13,000 around in June, and this increased to 3,17,000 in July, then 3,26,000 in August, and 3,32,000 in September, and in October 3,89,000. So the sale of passenger vehicle is moving ahead month after month. So demand is happening. That is reflecting that there is a great demand in the economy.
That's why as there is a great sale of the passenger vehicles, so the production should also follow. So that's why the profits of the companies will be very, very bright in the coming times. That's why as the markets are always forward looking, so markets are anticipating that these auto companies will perform better in the coming quarters. We'll be taking a short commercial break at this point of time and be back with you very soon. सुरक्षित सेवानिवृत्ति के साथ साथ एनपीएस आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने में भी मदद करता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। मिलिए एक और दान बहादुर से। इन्होंने गारंटीड रिटर्न्स के प्रॉमिस पर इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट पक्का है, गाड़ी भी पक्की। मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, कोई गारंटी कैसे देगा? आप छोड़ो ना। और आप हाथ धो लो पैसों से। गारंटीड रिटर्न्स धोखा है। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Welcome back to Market Mantra. We're in conversation with Mr. S.P. Sharma, and we're talking about how the markets behaved today. And we would like to know from you how the FIIs today stayed muted ahead of the festival break, and global market traded on a negative note ahead of the announcement of the US GDP data today. Do you think this consolidation is warranted in the near term due to peak valuations, and what are the risk factor for the market? Yes, I think markets will remain volatile for some time, and markets will be in the consolidating mode as holiday season follows. But the risk factors, I would say the inflation is a major risk, because inflation trajectory is not that much comfortable right now, because of the prices of vegetables and other associated items. Now the inflation is again at around 5.5%. So I think that is a risk to the market in the coming times. If the inflation escalates, then that can cause some uncertainty and some weakness in the market in the coming times. But I don't see that the inflation escalation will happen in the coming, because government is taking a lot of measures and trying to improve the supply chains and to control the prices. They are providing so many facilitation to the distributors. So inflation is expected to settle at around 4.5 or somewhere between 4.5 to 5% in the next few months. But going forward, geopolitical developments will also be considered, as these are lingering, and there is no full stop in the in their war, like Russia, Ukraine, and Gaza and Israel. They are in a major conflict, so that can also be challenge the market once again in the coming times if this war lingers more. श्रोताओं, खबरों का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। सामान्यतः हम आपको शेयर बाजार, घरेलू शेयर बाजार के साथ वैश्विक शेयर बाजार की ओर ले चलते हैं, लेकिन पहले स्वदेश से ही कुछ खबरें, उसके बाद हम वैश्विक बाजारों की ओर चलेंगे। केंद्र सरकार ने बताया है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना PMAYU के अंतर्गत देश में 1 करोड़ 19 लाख से अधिक परियोजनाओं की मंजूरी दी गई। इनमें से 78 लाख आवास का निर्माण पूरा कर लिया गया है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार बस्तियों में रहने वाले लोगों द्वारा सुपुर्द किए गए परियोजना प्रस्ताव सहित शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों और सभी योग्य परिवारों को गृह निर्मित करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है। खबरों का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 9वें दौर की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री जोशी ने कहा कि इस बार कुल 26 कोयला खदानों की पेशकश की जाएगी। उन्होंने कहा देश में बिजली की कुल खपत 2030 तक दोगुनी होने वाली है। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अब वैश्विक बाजार, सबसे पहले वैश्विक बाजार में एशियाई बाजार, जहां लगातार दूसरे दिन आज मिला जुला रुख दिखा है।
निवेशकों द्वारा की गई लिवाली से एक और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.6% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक 0.1% बढ़त के साथ बंद हुए। उधर बिकवाली के दबाव में दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.5% घाटे में रहा। जापान का निक्केई 225 1.6% नुकसान के साथ बंद हुआ। वहीं हांगकांग का हैंग सेंग बिना किसी खास उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर पर ही दिखा। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक गिरावट चल रही थी। लंदन का फुट्सी अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.5% घाटे में था। जर्मनी के डेक्स में भी 0.5% की गिरावट थी, जबकि फ्रांस का कैक 40 0.4% नुकसान के साथ कारोबार कर रहा था। The three major US indices fell more than 1% yesterday after an abrupt mid-afternoon nosedive ended Wall Street's impressive rally, which had been driven by falling interest rates and the Federal Reserve's dovish turn. The Dow Jones Industrial Average declined 1.3%. The Nasdaq Composite Index and the S&P 500 both slipped 1.1%. How much of the US yields contributing towards India's recovery? They eased with the 10-year yield falling to 3.85% level today. Yes, that is favoring India's flow, capital flow in India's markets, because when there are when the returns or the bond yields are decelerating in the advanced economies like the US, then these are favorable for the Indian economy and attract more and more foreign investments. Okay. That is happening in the market as we are gaining strength and markets are making the new highs. Okay. Moving on, oil prices fell today as concerns over low demand following a surprise US crude inventory build outweighed jitters over global trade disruptions due to tensions in West Asia. In intraday trade, Brent crude was trading at $79.46 per barrel, while US West Texas Intermediate crude was trading at $74.03 per barrel when reports last came in. चले सराफा बाजार, जहां आज नरमी के आसार दिखे हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी अनुबंध के लिए समाचार तैयार किए जाने तक सोना मामूली घाटे के साथ 62,412 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं मार्च अनुबंध वाली चांदी भी 202 रुपए घटकर 75,284 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। वैश्विक बाजारों में भी सोने में नरमी थी। समाचार तैयार किए जाने तक सोना $2,045.60 प्रति औंस पर चल रहा था। चांदी $24.60 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी। Mr. Sharma, thank you so much for being with us and taking all the queries related to markets with us. Thank you. And before we close, the headlines once again. Parliament passes the Telecommunications Bill 2023 to replace the Indian Telegraph Act 1885. Key domestic stock indices rebound from early losses. Sensex finishes at 70,865. Nifty ends at 21,255. And a total 1.19 crore projects under PM Awas Yojana Urban have been sanctioned. 78 lakh houses have been completed. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. मिलिए एक और दान बहादुर से। इन्होंने गारंटीड रिटर्न्स के प्रॉमिस पर इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट पक्का है, गाड़ी भी पक्की। मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, कोई गारंटी कैसे देगा? आप छोड़ो ना। और आप हाथ धो लो पैसों से। गारंटीड रिटर्न्स धोखा है। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। अपने सुरक्षित भविष्य के साथ साथ वित्तीय स्थिरता के लिए भी एनपीएस पर भरोसा करें। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। Market Mantra.
से हर चेहरा कुछ यूं मुस्कुराएगा। लो चुन लो इसे आज तुम, खुशियों को दो एक नई धुन। LIC निवेश प्लस, जो देगा आपको 2 फायदे, इंश्योरेंस भी और इन्वेस्टमेंट भी। LIC हर पल आपके साथ। जोखिम घटकों, नियम और शर्तों की अधिक जानकारी के लिए बिक्री समापन से पहले कृपया बिक्री